Hello my sweethearts, welcome back to the second part of the previous video, which will be all about present habits, that how to show present habits and English. Okay, I mean present habits, because the previous video was all about past habits, but in this video I will teach you present habits, that how to show present habits and English. So here we go, let's get start. सो गाइस, प्रेजेंट हैबिट्स का स्ट्रक्चर एंड इंग्लिश में कुछ यूँ होगा कि पहले हम यूज़ टू लगाएंगे और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, जेरंड लगाएंगे। आई मीन जेरंड वर्ब प्लस ing, राइट। लेकिन यहाँ पर हम आई के साथ एम लगाएंगे, जो हम पहले से जानते हैं। यू, दे, वी, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और ही, शी, इट सिंगुलर नोन के साथ क्या हम इज़ लगाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब मुस्बत जुमले। मैं सच बोलने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग ट्रुथ। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग ट्रुथ। मैं काम करने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू वर्किंग। आई एम यूज्ड टू वर्किंग। मैं उसकी नखरों का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू हर टेंट्रम्स। आई एम यूज्ड टू हर टेंट्रम्स। उसे छोटे कमरे में रहने की आदत है। He is used to living in a small room. He is used to living in a small room. नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नपी जुमले। मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। I am not used to getting up early. I am not used to getting up early. अहमद पैदल चलने का आदी नहीं है। Ahmad is not used to walking on foot. Ahmad is not used to walking on foot. सर हामी तलाश को लफ्ज़े ना सुनने का आदत नहीं है। Sir Hamid Talash is not used to hearing the word of no. Sir Hamid Talash is not used to hearing the word of no. Interrogative sentences मतलब इस्तिफहामिया जुमले। क्या तुम इस गर्मी की आदी हो? Are you used to this heat? Are you used to this heat? क्या हारून बस में सफ़र करने का आदी है? Is Harun used to traveling by bus? Is Harun used to traveling by bus? So friends, it was all about today's video. Hope you have enjoyed and learned as well. And don't forget like and comment, cause your one like encourages me more. And I will catch up with you in next video. Until next video, goodbye.